हिमाचल विधानसभा चुनाव का बजेगा बिगुल और थोड़ी देर बाद ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी माहौल है और उसी के साथ चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होगा। साल से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है। इट्स a fantastic rainbow of the voters ranging from 18 years to 100 plus, and we'll focus a bit on this rainbow. I would explain in the detail about this, but in the meantime, to move forward, the elections, when we conduct, we have three broad objectives. First is the elections have to be free, fair, inclusive, accessible, and inducement free. And the second major vertical is the voter, that the voting experience should be very, very comfortable. And thirdly, the maximum voter participation, especially of the young voters, urban voters, PWDs, and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों। Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last two rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the five-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs
and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is now every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the new, now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है. तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए. Friends, I will also tell you how many specifically benefited by this amendment. I will come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now, the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting, below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is an lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए.
तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, every polling station would have a ramp which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. Every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे, ऑल पोलिंग पर्सनल and also even the security staff, 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज हम लोगों से ज्यादा है। So what they require is essentially the equity and equal opportunities, not mere sympathy. And therefore, we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers, so that Matdata Rupi Indradhanush har booth par dikhai de. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections, that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड। साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, and everything would be videographed. So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior.
तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी। Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he load, either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नार्कोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very critical application is KYC, know your candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की FIR है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी एंटाइटलमेंट्स उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
and we have directed, commission has directed that it will be served to the candidates on first in, first out basis, so that there is no bias. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. The GST would keep a track on all the e-bills to find out that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज़ उसी प्रकार से चल चुकी है. उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सत्य हो सकती है कि नहीं. फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें. अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है. But we have established social media teams in the CO office and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950, all, including the local body elections. And there are 1,184, and many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom
we are very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते, उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the epic card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे. And the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. The notification date. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम बड़ी बातें चुनाव आयोग की ओर से की गई है और सबसे बड़ी बात ये कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है इलेक्शन कमीशन, ये साफ तौर पर कहा गया. तो वहीं पर चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पूरी जानकारी साझा करते नजर आए, जिसमें जब वोट जो है जिस तरह से मतदान शुरू होगा किस तरह की तैयारियां वहां पे हो उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है. कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होंगे इसकी भी जानकारी साझा की गई और जो वोटिंग होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी उसकी जानकारी साझा की गई है. और 80 साल के ऊपर के जितने भी वोटर्स होंगे वो घर बैठे ही जो है वोट देंगे, ये भी जानकारी साझा की गई है. देखिए तमाम वो व्यवस्थाएं होंगी चुनाव के दौरान जिससे किसी तरह की कोई परेशानी ना वोटर को हो ना कैंडिडेट को हो, ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया है. इसी के साथ और बड़ी बातें कही गई वो भी आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे. नामांकन तक नए वोटर जुड़ सकेंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी दी है. और उसी के साथ बहुत से पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जो महिला
संचालित होंगे, ये भी चुनाव आयोग ने कहा, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को दिखाना। और ये कहते नजर आए चुनाव आयोग के तमाम बड़े अधिकारी। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात ये भी कि जो वोटिंग होगी उसके लिए पोलिंग बूथ पर तमाम व्यवस्थाएं होंगी, चाहे जो वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जो कैंडिडेट वहां पर होंगे, वॉलंटियर वहां पर होंगे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होंगी। तो ये तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से, जो पूरी जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर, हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव, ये बड़ी जानकारी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और देखिए, इसी का सभी को इंतजार था और जिस पर मोहर अब लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होंगे और तारीखों के ऐलान का इंतजार था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जानकारी, 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये तारीख तय हो चुकी है, 12 नवंबर को चुनाव और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, सबसे बड़ी और अहम जानकारी सबसे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूर्य समाचार के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रखे हैं। 12 नवंबर की तारीख तय की गई है, 12 नवंबर को जो है चुनाव होंगे और उसी के साथ 8 दिसंबर की तारीख होगी जिस दिन हिमाचल प्रदेश में नतीजे घोषित किए जाएंगे। और इस बीच चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, उसकी पूरी जानकारी भी चुनाव आयोग की ओर से दे दी गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, उसके लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। इन्होंने साफ कह दिया है। 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव, जिसके लिए तारीख का ऐलान 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलिए, ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। अरुण, इंतजार था कि सबसे पहले तारीखों का ऐलान हो और उसके बाद चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं वो भी समझेंगे। अब तारीख का ऐलान हो गया है, नतीजे कब घोषित होंगे ये भी बता दिया गया, और भी कुछ तमाम बड़ी बातें कही गई हैं अरुण, कि जो चुनाव होंगे उस दौरान क्या व्यवस्थाएं होंगी, जरा उस पर एक नजर डालें। हेलो जी अरुण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी, देखिए, चुनाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घंटी बज चुकी है और 12 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एक लंबा इंतजार, एक लंबा फेज चुनाव के नतीजों के लिए जरूर रखा गया। और इसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि गुजरात के चुनाव के साथ गुजरात के नतीजे जो आए, शायद उन तिथियों को मिलाने की कोशिश ये आगे संभवतः दिखाई दे सकती है। लेकिन बहुत कम वक्त, देखिए, चुनाव आयोग ने लगभग 1 महीने का वक्त दिया है और शायद ये बात कांग्रेस भी जानती थी, ये बात भाजपा भी जानती थी, इसलिए तमाम बड़े नेताओं के दौरे हम यहाँ पर देख रहे थे। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश के भीतर की जो दुश्वारियां हैं, खास तौर पर बर्फबारी के इलाकों की, उसको लेकर स्ट्रैटेजिक तौर पर तैयारी कर ली गई है और उसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन खास फोकस किया है चुनाव आयोग ने कि इस वक्त के जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं या अक्षम लोग हैं, उनकी संख्या की जानकारी देने के साथ बताया कि उनको भी यहाँ पर वोट के लिए आना है। उनका एक उत्साहित जो है यहाँ पर रिस्पांस चुनाव आयुक्त खुद जब यहाँ आए थे उनको मिला था, उनकी टीम को मिला था। तो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने के अपनी अपील के साथ उन्होंने इस तिथियों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्याम शरण नेगी देश के पहले सबसे बड़े वोटर, 100 साल का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लगभग 1180 के करीब बुजुर्ग 100 साल का आंकड़ा पार कर चुके हैं, उन तक चुनाव आयोग पहुंचा है। तो हिमाचल में चुनाव की घंटी बज चुकी है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था और इस इंतजार के बाद एकदम से झटका इसको राजनीतिक दलों के तौर पर कांग्रेस जरूर देख पाएगी, क्योंकि सिर्फ बहुत कम वक्त है। बिल्कुल, समय बहुत कम है और उसी के साथ एक ही चरण में चुनाव होंगे, एक ही दौर के चुनाव। ये बिल्कुल, देखिए, हिमाचल की ये रीत रही है। हिमाचल में बहुत कम ऐसा वक्त रहा है कि एक वक्त में जो है चुनाव ना होते हों। ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहले से माना जाता है एक सिंगल फेज के अंदर 68 विधानसभा के सीटों के जो चुनाव हैं वो एक ही दौर पे कराए दिए जाते हैं। कुछ मौके ऐसे जरूर रहे हैं जब वो स्वतंत्रता के बिल्कुल ठीक पहले, उसी की वजह से श्याम शरण नेगी जो है वो देश के पहले मतदाता बने थे, जहां बर्फबारी के दौर में पहले मतदान करा लिया गया था। लेकिन उसके बाद का दौर जो भी देखा गया है वो फर्स्ट फेज, सिंगल फेज के अंदर हिमाचल प्रदेश के चुनाव होते रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल अरुण, इस पर बात करेंगे 2017 में क्या स्थिति रही और उसके बाद अब आगे किस तरह के चुनाव होंगे। समय बहुत कम है, दोबारा वापस आऊंगे आपके पास, बनी रहिएगा। विनय मेरे साथ सीधा दिल्ली से जुड़े हुए, उनसे भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हिमाचल में तारीखों का ऐलान हो गया, बहुत कम समय है हिमाचल प्रदेश में, अब बहुत मिनिमम समय। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल के चुनावों की घोषणा कर दी है। 12 नवंबर वो दिन है जब हिमाचल में चुनाव होने हैं, सिंगल फेस, यानी कि एक ही फेस में एक ही तारीख जो कि 12 नवंबर है उस दिन चुनाव होंगे। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, 8 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। चुनाव आयोग ने साफ करा है, तमाम आंकड़े यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से हिमाचल को लेकर दिए गए हैं। 68 विधानसभाओं सीटों पर एक ही फेस में चुनाव आयोग ने बात की है कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने जा रहा है। 12 नवंबर वो दिन है जिसको लगातार सबको इंतजार था सुबह से कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या तारीख चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। 12 नवंबर की जो तारीख है, चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी तरह से टीमें उनका दौरा कर चुकी है और चुनाव को लेकर हिमाचल की तैयारियों का दौरा किया जा चुका है। चुनाव को लेकर हिमाचल पूरी तरह तैयार है और इसको लेकर इसीलिए सिंगल फेस में, पहले भी हिमाचल में जो चुनाव हुए हैं वो सिंगल फेस में हुए और इसलिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिंगल फेस में ही चुनाव होंगे, एक फेस में ही चुनाव होंगे। 12 नवंबर को चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। जी ठीक है विनय, बने रहेगा। देखिए बिल्कुल समय बहुत मिनिमम है ये हम कह रहे हैं, लेकिन देखिए कॉम्पिटिटर जो साफ तौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हमेशा से टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में रही। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो क्या कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? और उनके समय बहुत कम, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। हेलो अरुण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, आप सवाल दोहराएंगे मेरे को? बिल्कुल अरुण, हम बात ये कर रखे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ही कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब बहुत मिनिमम समय है जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी कि समय कम, लेकिन उसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो इतिहास है वही चलता रहेगा और कांग्रेस की एंट्री द्वारा होगी? देखिए बिल्कुल आप देखिए आप बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो तस्वीर आपको साफ दिखाई देगी। ये पहला मौका था, प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली कांग्रेस अपनी चुनाव की आज ही करती दिखाई दी और चुनाव का ऐलान भी हो गया। और चुनाव के ऐलान के बाद लगभग 1 महीने का वक्त, 12 नवंबर हिमाचल प्रदेश के अंदर मतदान होना है, तो बहुत कम वक्त है। और राजनीतिक दलों की स्थिति देखिए, भाजपा पहले से ये मानकर चल रही थी कि टिकटों का ऐलान वो देर से करेगी, लेकिन कांग्रेस जल्दबाजी में दिखाई दे रही थी, गफलत में फंसी, कहीं उसके नेता जिनको टिकट नहीं मिलती वो दूसरी छोड़ ना चले जाएं, इस गफलत में कांग्रेस दिखाई देती रही। और शायद यही वजह है, ये जो छोटा सा वक्त मिला है कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता, ये कांग्रेस पार्टी खुद हमसे ज़्यादा समझती होगी। लेकिन कम वक्त मिलना कांग्रेस के लिए कितना घातक, भाजपा के लिए कितना लाभदायक, या दोनों को इसकी बात को रिवर्स कर लें, वो फैसला जनमत के फैसले के साथ जरूर दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान हो चुका है। दोनों राजनीतिक दल अपने बड़े चेहरों को, आज की अगर प्रियंका गांधी की रैली को देख लें तो उसके साथ हिमाचल में चुनावी माहौल बनाने के लिए उतार चुकी हैं। कल अमित शाह आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आगे बढ़त बना चुकी है भाजपा। प्रधानमंत्री बिल्कुल अरुण, इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी, क्योंकि चलिए फ्यूचर में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो 3 दफा पीएम मोदी गए, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिमाचल का रुख कर चुके हैं और एक बार फिर से अमित शाह भी हिमाचल का रुख करेंगे। तो ये माने कि मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बड़ी सौगातें दी गई, पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें दी, तो पहले से ही बीजेपी की ओर से तैयारी चलती रखी। तो कहीं ना कहीं ये माने कि कांग्रेस की शुरुआत थोड़ी देर से हुई है कि आज उन्होंने हुंकार भरी है सोलन ठोडा ग्राउंड से, लेकिन अब समय बहुत कम, तो इसलिए ये मानो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है आने वाले समय में। देखिए बिल्कुल इसको माना जा सकता है, इसको स्ट्रैटेजिक जीत भाजपा की मानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ये नहीं पता था कि चुनावों का ऐलान जल्द हो सकता है। हिमाचल की पहले से बात ये बिल्कुल साफ है कि बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं वो नवंबर महीने में अधिकांश करा दिए जाते हैं। कांग्रेस भी इस बात को जानती थी, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर कांग्रेस उलझी दिखाई दी टिकट बांटने के मामले में।
आपको याद होगा कि इससे पहले जी। 2 या 3 बैठकें कांग्रेस की दिल्ली हाईकमान के साथ, स्क्रीनिंग कमेटी के साथ अपने आला कमान तक पहुंचाने की बात सामने होती रही है। लेकिन भाजपा इस मौके के ऊपर हिमाचल में अपने बड़े नेताओं के साथ दस्तक देती रही, यानी जनता के बीच में पैठ बनाने का काम, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का काम स्ट्रैटेजिक तौर पर भाजपा ने पहले कर लिया है। कांग्रेस उसमें पिछड़ी जरूर है, लेकिन उम्मीद उसने नहीं छोड़ी है। प्रियंका गांधी की आज की रैली के साथ आपने देखा होगा कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई। कनेक्ट बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की तरफ से भी थी कि हिमाचल का अगाध रिश्ता किसके साथ बढ़ा है। उसी तरह का गांधी परिवार का जो एक कनेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, सोनिया गांधी हों, और आज के दौर में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी हों, ये कनेक्ट बनाने की कोशिश, क्योंकि हिमाचल की जनता, पहाड़ की जनता, एक ऐसी जनता जो अपने नेताओं के दिल को जीत लेने के बाद, नेताओं की अपनी बातों को देखने के बाद उनके साथ चलने की बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। और वोट देखिए, बैंक के कांग्रेस जरिए की जाहिर बात हो या करती रही बीजेपी की, है। किस उस तरह कनेक्ट से को बनाने की कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक, वो एक बार फिर से आपसे समझूंगी और टिकटॉक को लेकर भी हम बात करेंगे। अरुण, वापस आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। तो जो है चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसी के साथ चुनाव आयोग ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। Date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. तो मतदान 12 नवंबर, मतगणना 8 दिसंबर तारीखों का ऐलान हो गया है। और उसी के साथ देखिए, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं। बागबानों की परेशानी, कर्मचारियों का मुद्दा, ये काफी अहम है, जिसको लेकर देखिए प्रियंका गांधी ने भी जिक्र किया था छोटा ग्राउंड में, जब हम आपको सुना रहे थे कि अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही। रोजगार का भी वो जिक्र करती नजर आई कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। फिजूल खर्ची की हम बात करें तो ये तमाम मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए, मेरे सहयोगी रवि चंदेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी हमारे साथ हैं। और एक बार फिर से मैं अरुण का सबसे पहले रुक करूंगी, क्योंकि कुछ बात अधूरी रह गई जिस पर हम जिक्र कर रहे थे। अरुण, हम बात कर रहे थे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि टिकटों को लेकर भी खासकर अब बात करना जरूरी होगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अब ये देखना होगा कि जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में चले गए, तो क्या उनको खुश करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये देखना होगा, या फिर ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये भी देखना रहेगा।